मैडम कामिनी धीमान जी को आभार व्यक्त करता हूँ। बहुत बहुत आभार। और आज के हमारे वक्ता डॉक्टर सुरभि एस वत्स मैडम का मैं बहुत स्वागत करता हूँ, हार्दिक स्वागत करता हूँ। पंचकर्म एक ऐसी विधा है जो हर रोग के उन्मूलन में कहीं ना कहीं कोई ना कोई असर जरूर डालती है। तो आज बहुत अच्छा सब्जेक्ट है जिसमें एक्सपर्ट हमारी डॉक्टर सुरभि हमें बताएंगी कि पंचकर्म इनफर्टिलिटी में किस तरह से काम आता है। मैं डॉक्टर सुरभि एस वशिष्ठ, मेडिकल ऑफिसर आयुर्वेद सेंटर, एमडी फ्रॉम कालवेश्वर, एमडी फ्रॉम काल भैरवेश्वर आयुर्वेदिक कॉलेज बेंगलुरु। वेलकम मैडम, वेलकम। Kamini ji will also join within due course. She is in Dubai at present. So thank you very much. आदरणीय मैडम गायत्री भट्ट जी को नमस्कार। हमारे साथ ऑफ द डाइस भी सभी एक्सपर्ट जुड़े हैं, उन सभी को मेरा हार्दिक नमस्कार। मैं अब डॉक्टर सुरभि से प्रार्थना करता हूं। आई वुड लाइक टू इनवाइट डॉक्टर सुरभि फॉर हर प्रेजेंटेशन on the topic infertility in Panchkarma in infertility. Welcome, madam. Welcome, Dr. Surabhi ji. Thank you. Hello. Thank you, Namaskar. sir. Thank you for the warm welcome, sir. You can share your presentation if any. Yes, sir. Yes, sir. Your presentation is visible. You can go for slideshow Yes, sir. to maximize the size of slide. Okay, sir. I'll start, sir, then. Yes, yes. Welcome. Namaste, everyone. So, I'm Surabhi. Today, let us deal with Panchakarma procedures in infertility. Ayurveda mainly stresses upon swasthasya swasya rakshanam and aturasya vikara prashamanam. So, that is the main goal of Ayurveda. And this being told, there are many diseases or vyadis which will be caused mainly due to the disequilibrium of the doshas. So, for the elimination of such the doshas and bring back the equilibrium of these, Panchakarma is being adopted. And infertility is one such gynecological disorder wherein there will be the disruption in the normal process of the conception. Before dealing with infertility, I would want to show some light on the menstrual cycle and its role in the infertility. So we know menstrual cycle, it is divided into three phases, that is Rajas Rava Kala, Rutu Kala, as well as Rutu Vyatita Kala. So these three divisions or these three phases, even in modern science, can be correlated to the menstrual phase, the proliferative phase, ovulatory phase, and the secretory phase. So we'll see how the correlation can be done. First, coming to the Rajas Ravakala, which goes on from 5 days to 7 days, wherein Acharya says that na ati bahu, na ati alpa will be the Raktasrava happening, and it will also be Pancharatranu that is for the period of 5 days. He also says that it will be na picha daha arti,
So without having any pain, burning sensation, as well as uh, any discomfort during this particular period. So this usually happens with the nishpramana of the rakta, that is the atava. So it can be said that the apanavata will be mainly predominant during this particular phase. The next phase is the Rutukala. So this phase usually takes place for a period of 12 days. That is 40, from fourth day up till the next 12 days. So this also will have certain anabolism as well as the growth factors. So it can be considered as a kapha predominant condition. Coming back to the last one, that is the Rutu Vyatita Kala, is the stage where the constriction of the yoni or the closure of the yoni will usually takes place. So there won't be any entry of the sperm during this particular phase, and there are various secretions as well as the hormonal uh, discharges which will happen during this phase. This can be considered under the phase of predominance of pitta. So this is how it can be correlated. That is the status of the doshas according to the three phases of menstruation. Modern science also mentioned regarding the menstrual phase, proliferative, as well as the secretory phase. There are slight correlations which can be done. So, in case of the menstrual phase, where Apanavata was predominant, so here in modern science, they say there is the lack of estrogen as well as the progesterone, maybe due to the blood loss. So, coming to the proliferative phase, so this is happening with the restoration of this estrogen as well as the progesterone, wherein the maturation of the ovum usually takes place, as well as the endometrial thickness also keeps on increasing. So that is nothing but the action of the kapha, which is happening mainly due because of the influence of the Prithvi as well as the Jala Mahabhuta, and also the establishment of Navina Raja is generally taking place. The secretory phase is the phase wherein there will be hormonal secretions as well as the implantation of the fertilized ovum usually which will take place. So in this particular phase, the pitta will be predominant. So understanding the predominance of dosha in these particular phases is important. Why? Because if there is any changes or any disruption in the menstrual cycle, wherein we see the extension of the menstrual cycle, the extension of the secretory phase, or the extension of the menstrual phase itself. So we can identify which dosha would be predominant, and through that dosha pratyanika chikitsa could be done. So that is why this understanding the menstrual cycle becomes very important here. So coming to the topic proper, female infertility, what we call it as Vandhya. Amarakosha says it is Rutau api phalarahitasya. That is a condition which is unfruitful or unproductive. So in Ayurveda, it is not only limited to the non-achievement of pregnancy, but also includes failure of the successful continuation of pregnancy also. So that is the definition of infertility. So by this understanding of any particular condition, we usually keep a lens in Ayurveda, which includes Hetu, Linga, and Aushadha. That is nothing but the Trisutra. So this, keeping Trisutra in mind, we know the Linga, that is infertility. So now we have to understand how the Hetu as well as the Aushadha could be planned. Here in this particular platform, I am going to deal mainly about the Shodhana Rupi Aushadha, that is the Panchakarma. There are certain factors which are responsible for the formation of the Garbha, that is the proper progeny, which are mentioned in the classics. So for these,
Acharya mentions Dhruvam Chaturnaam Sanidhyat Garvam Syat Vidipurvakaha Rutukshetra Ambubijanam Samagryad Ankuro Yatha. Just like how for the germination of the seed, we need all these four factors, that is Rutukshetra, Ambubija. Similarly, for the formation of the Garbha, also this is required. Here, Rutu basically it says that is nothing but the Rajas Samaya, that is the Rutu Kala itself, because during the Rajasrava as well as in the Rutu Vyatita Kala, it is contraindicated. And Kshetra here indicates the Garbhashaya, that is the healthy female genital tract. And Ambu here is the Ahara Pakaja Rasadhatu. So you can correlate this to the proper nutritional elements also. Bija here refers to the Stri Pumsayoho Artava as well as the Shukra. So the proper functioning or the healthy Shukra as well as Artava would give the healthy progeny. So these are the factors also called as the Garbha Sambhava Samagri. So these are required for the proper formation of the Garbha as well as Shukra Asruk Atma Ashaya Kala Sampat. यस्य उपचाराश्च हितास्तथा अन्नैः गर्भश्च काले च सुखी सुखं च संजायते संपरिपूर्ण देहः. That is for the formation of the samparipurna deha as well as for the progeny which will be vyadhi rahita as well as without any hindrance. So if we have to achieve such a progeny, we require Shukra, Asruk, Atma, Ashaya, Kala, Sampat. Sampat of all these five factors as well as Kala and Hita Ahara Anna. These are all the factors which will be required for the good progeny or the proper progeny. If it fails, so in such a condition, this will lead to infertility. That is, if we note down the causes of infertility, it will be the yoni pradosha. Yoni pradosha here refers to the 20 yoni vyapats which have been mentioned by acharyas. So any yoni vyapat, if it leads to the complicated condition, Acharya says, Shukram na dharayati, tasmat garbham na dharayati. So it will further lead to infertility. That is infertility, which is happening mainly because of the yoni vyapat. Again, manasabhitapat refers to the psychological factors like stress or any depression, such condition. Next one is the Shukra Asruk. Shukra Asruk Ahara Vihara Dosha. Here Shukra Asruk Dosha is nothing but the Bija Dosha. Also, Artava is also considered as Stri Bija according to Sushruta, so that also can be taken. Ahara Vihara Dosha, now we can correlate to the sedentary lifestyle which is being followed by many individuals. Akala Yoga. Akala Yoga here again mentions regarding the Rutukala. So when the conception is to be taken place, so that also has to be taken care. Balasankshayat is the Dhatukshaya, which will further lead to the Shukrakshaya or the Atavakshaya. Garbham Shirat Vinnati Sapraja. So these are the certain factors which will be responsible for the infertility. So if we categorize with the male factor as well as the female factor, so we get Shukradosha under male factor and the remaining other being Yoni Pradosha and Asruk Dosha under female. So both the factors, both male and female, would go for Manaso Abhitapat as well as Balasamshayat, Ahara Vinara Dosha and Kala Yoga. Under that, only for the female infertility, which we are dealing right now, Yoni Pradosha, Manaso Abhitapa, Balasamshayat, these are all the certain factors which will be causing the female infertility. Other certain references which are mentioned in the Samhitas would be the Bija Bhaga Pradosha, which mainly deals with the Shonita as well as the Garbhashaya Dushti, which will happen due to the Dosha Prakopa, and this further lead to the Bija as well as Bija Bhaga Avayava Dushti. Again, Yoni Vyapat and its Chikitsa, which is being mentioned in Charaka Chikitsa 30th chapter. The Upadrava of which I already mentioned, Shukram na grihnati, tasmat garbham na dharayati.
as a complication, infertility might occur. In Sushruta Samhita, Artava Dushti, he mentions Prajotpadane na samartho bhavati. So that is, there won't be any good progeny mainly due to the Artava Dushti. Artava Sroto Vidya Lakshana also talks about Vandhya as well as Maithuna Asahishnata and Artava Nasha. Again, the Yoni Vyapat Chikitsa with Vandhya and Shandi Yoni will be mentioned. Kashapa Samhita directly deals with Vandhya being called as one of the Vatajan Anatmaja Vikara, where he says Basti Karma is considered to be the Shrestha in that, or the Basti Sadhya, specifically giving very much highlight to the Anuvasana, such as Vathagnanam Sarvesham Anuvasanam Uttamam. Again, coming to Sharirasthana, he gives a Kramataha or Kramashaha formation of the Panchakarma, which should be followed, following by Snehana, Svedana, Vamana, Virechana, and Asthapana Anuvasana in particular or in this particular order. Again, in Kalpasthana, mentioning of Shatavari as well as Shatapushpa Kalka has been mentioned. This being told mainly due to the Prajasthapana gunas of Shatavari as well as Shatapushpa has been mentioned in this particular chapter. Vela Samhita also mentions regarding the Avandhya Stri, that is nothing but a fertile woman. So she having the Pathya Lagu Bhojana as well as Anudavarthana Shilana, Upradushta Garbhashaya, so without having any deformity in the Garbhashaya, that is nothing but the Kshetra. Suvishuddha Srotasa, all the patency of all the Srotasas, be it Anu Srotas or Anukta Srotas also, if it is, if the patency is good, then he will be considered as fertile. If Viparyaye Viparyayaha, if this is not being achieved or if this is not being followed, then that will lead to the Vandhya, that is infertility. Again, Harita also mentions regarding six types of Vandhya in a specific chapter itself, and it's Chikitsa. यदपत्यानां मूलं नार्या परं नृणां तद्विघातो गदैश्चासां क्रियते योनिमाश्रिताः. So Acharya Charaka, he mentions regarding the importance of the kshetra, that is the ashaya. So if there is Shuddha Yoni, then there will be formation of the healthy progeny. So if there is no Shuddha Yoni, if the Yoni is only deformed by those mentioned 20 Yoni Vyapat, then again there won't be any production of the normal Garbha, is what he says. So taking all these factors into mind, selection of Panchakarma or which Panchakarma in which avastha should be adopted should be known to us. Here being the main intention of us is Dhatu Samyata, that is keeping everything in equilibrium. Once equilibrium is attained, then there will be production of good progeny so that the Arthava as well as Shukra also will be in good healthy state. So for the selection of this, the main principle of Shodhana, which is Dosha Kshina Brahmitavya, Kupita Prashamitavya, Vruddha Nirharitavya, Sama Paripalya iti Siddhanta. Acharya Sushruta mentions this very beautifully by saying the doshas which are in Kshinavastha has to be Brahmana, that is, it has to be given more of the Tarpana or the nourishing type of a treatment. The ones which are Kupita, so here again Chaya Purvaka, Achaya Purvaka, again another classification occurs. In case of Shodhana Rupi Shamana type, that is Chaya Purvaka, if Prakopa is seen, then again Shodhana has to be done. Again, Vriddhi, directly Vilayana Rupi Vriddhi, if it is present, then Nirharana of the doshas. So whatever has been increased, that has to be removed from the body is what is mentioned. Sama Paripalya. So the other promotive as well as the preventive aspect of Panchakarma also is being mentioned, which is Sama Paripalya here. Along with these, the other Dasha Samiksha Bhavas also has to be seen. Dosha, Desha, Balam, Kala, Prakriti, Satmya, Kala, all these have to be mentioned. So, Bahir Dosha Nirharana is the action of the Shodhana, wherein
Niruha, Vamana, Kaya, Shirodeka, Astra Visruti will be enlisted. And the selection of the individual will be such that he having Prabhuta Shleshma Pittasramalaha Samsrishta Marutaha Brihatchalino Balino Langaniyo Vishuddhibihi. So we know Langana is of 10 types. In that, Shodhana Rupi Langana comes as 4 types. And in those 4, the indication of these will be Prabhuta Shleshma Pitta Asramala. So it is not very little quantity. As we know, Bahudosha Avastha is the condition wherein the Panchakarma will be indicated. So that is nothing but the Prabhutata of Shleshma, Prabhuta Pitta, Prabhuta Astra as well as Mala. Along with that, Samsrishtata of the Maruta, if it is seen, and if the person is well built enough to take these particular procedures, then only he or she should be indicated for Panchakarma. By doing so, even if we consider the other factors, the Kayagni Abhivardate, Vyadeshopashamyanti, in general, if we consider the other factors also, in this particular seminar here, I want to highlight Apatyam cha Vrishtim cha Asya Jayate. So he also mentions regarding the good progeny also would be achieved by following the Shodhana, that is, Tasmat Samshodhanam Kale Yukta Yuktam Pibenaraha. Kale Shodhana is being highlighted again here. Acharya Bhela, again he mentions regarding Vamanam Rechanam Chaiva Bastim Asthapanam Tatha Tasmat Tat Karayet Strinam Prasiddhaha Prasuvanti Vai. Direct indication of Vamana, Virechana, Basti Karma, including Asthapana, in case of female infertility can be quoted in this. As I told you, Kashyapa has mentioned the Kramashaha Upachara of these Panchakarma, with being Sneha Sveda, Vamana Virechana, Asthapana, Anuvasana, after only which he says Madhura Aushadhi Siddha, Kshira Ghruta Pishta for the Purusha as well as for the Stree, Taila as well as Masha has to be given. This can be understood as the promotive effect of Panchakarma. So, for the purpose of getting a good progeny, even if the person is considered swastha or even if the person does not have any deformity in Rutu Kshetra, Ambu Bija, Acharya Charaka again mentions the Chikitsa Sutra in case of the Yoni Vyapat, that is Sarvam Vyapanna Yonim tu Karmabihi Vamanadibihi Mrudubihi Panchabihi Nari Snigdasvinnam Upachare. So we know by following the Panchakarmas, we are supposed to be doing the Snehana Svedana as a Purva Karma. So following the Snehana Svedana, then followed by Mrudu Panchakarma is being indicated in case of Nari. Sarvataha Vishuddhayaha Shesham Karma Vidhiyate. So the other Sanika Chikitsas or any other Shamanas could be done later, is what he is mentioning. Again, he says, Evam yonishu shuddhasu garbham vindati yoshitaha. So, only when the shuddhi of the yoni takes place, then only there will be formation of the proper progeny, is what Acharya Saraka mentions. So, Panchakarma helps in achieving the detoxification at the level of the cell. So each particular cell would have its own toxin levels, and these particular toxin, with the help of Sneha Sveda, comes to the koshta, and from the koshta, with the help of the medicine, or either be the Vamana Aushada or the Virechana Aushada, it goes out of the body. So, which is the main purpose of Bahudosha Nirharana of Panchakarma. So, by achieving the detoxification at the cellular level, it helps in gaining the healthy ovum. Again, the Kayagni Abhivardhana, everything will help in the proper functioning of the HPO axis also, as well as the ovulation. The Sroto Shodhana, which usually takes place after the Panchakarma is being done, wherein the Stula Anu as well as the Anukta Srotas also will be cleansed out, so which will also help in case of the tubal patency also. This will give more bioavailability for the Aushada as well as Ahara after Shodhana which is being done. So dealing with each Panchakarma from the beginning.
So Snehana is to be taken before the in incorporation of the Panchakarma. That is before Vamana, Virechana, Basti, Snehana has to be done. So this is because specifically in case of infertility, which is occurred mainly due to the Yoni Vyapat. We know Yoni Vyapat, the Pradhana dosha here mentioned will be Vata dosha. So to deal with this particular Vata dosha, Snehana becomes the most important factor. Why? Because Sneho Anilam Hanti Mrudu Karoti Deham Malanam Vinihanti Sangam. So Anilam Hanti. So first important point is Anila Harana will be taken place. With its action, it will liquefy all the doshas which are present even in the periphery, and the Sangha will be relieved. So commonly used Sneha here what we can see is Balataila, Mishraka Sneha, Sukumara Grita, Kashmarya Grita, Palasarpi. Also Mahakalyanaka Grita could also be used. Coming to the Svedana, after performing the Svedana would give in Snigdasya Sukshmeshu Aineshu Linam, Svedastu Dosham Nayati Dravatvam. So once there is Sukshma Ayanas become Snigdata, so the whatever the doshas which are Leena in Avastha, so these Leena doshas will get liquefied. So the process of liquefaction generally occurs mainly with the help of Svedana. स्नेहक्लिन्ना धातुसंस्थाश्च दोषा स्वस्थानस्थ एष मार्गेषु लीनाः सम्यक् स्वेदैर्योजितैस्ते द्रवत्वं प्राप्ताकोष्ठं शोधनैर्यान्त्यशेषम्. So the purpose of doing sneha sweda is to get the utleshana first of the doshas as well as getting the doshas away from the dhatus. That is nothing but the dhatubhya prutatvata. So once if all these doshas have been liquefied as well as taken away from the dhatus, those could be brought to the kosha. That usually occurs with the help of Vamana Aushadhi as well as Virechana Aushadhi. So again coming in Vamana as well as Virechana, so these two pradhanyena bahudosha nirharane. So these two are very much important in case of removal of the doshas. Moreover than this, the Nasya as well as the Basti Karma will act in the Bahuvati Kartavyata action. So here Vamana will mainly deal with the Kapahara action, that is Kapi Vidagyat Vamana is being mentioned. And this specifically indicated in case of Artavakshaya, where Dalhana mentions it as Saumya Dhatu Kshaya occurs after performing Vamana, and Agneya Dhatu Vriddhi will be there, and Artava also Apyayati is being mentioned. So Artava, generation of the Artava also will be easier in case of Artava Kshaya. So he mentions Vamanam na Virekaha. So he says there is no requirement of doing Virechana. Vamana itself will be sufficient for the removal of the Saumya Dhatu and giving more Uttejana to the Artava. So this will increase the releases of the gonadotropins and it will promote the follicular growth. Enzymatic activities also will be improved by this, and thus the Artava Shuddhi also occurs and proper Artava Pravritti will also be seen in case of Artavakshaya. Though Virechana, we do not get much of a references for Virechana, with the intention of having Anulomana action as well as the Artava Dushti and imbalance of Kapha and Pitta if it is seen, then Virechana would be the best line of treatment. Again, Kashyapa mentions Virechanina Shubhyanti Prasidanti Indriyani cha Dhatavascha Vishuddhyanti Bijam Bhavati Karmukam. So here Bija we can consider it to be the Artava as well as Shukra. So by the process of Virechana, thus being said, all the dhatus also will be purified. Then the final one, that is the Shukra or the Artava, which we can consider. So the Bija also will become Karmukam, is what he mentions. Again, as I mentioned to you, Basti Karma as well as Nasya Karma will have wide range of application. Especially in case of Basti Karma, Basti is considered to be
Sarvakarmeshu Pradhanatamah. So mainly because of its Nana Dravya Samyogat. So that is, Acharya Sushruta only says, mainly because of its Nana Dravya Samyogat, it will give different forms of actions. That is, it can do Shodhana, Shamana, or Sangrahana, Thulam Karshayati, Krusham Brahmayati, all these would happen. So these this importance of basti in case of female infertility, if we see, we get a very good reference in Kashyapa saying Shishunam Ashishunam Basti Karmam Amrutam Yatha Vishajam Yartha Yashasi Shishorayuhu Prajam Pituhu. So Basti Karma is considered Amruta. It is given equivalent to the Amruta. Why? Because it can be advised even for the Shishu as well as the elder, that is the adult also. With respect to infertility, he says prajam pituhu, that is the proper progeny also will be achieved with the basti karma. Again saying shukravardhana as well as yoni prasadana, dhanyam vandyanam putradam. So the direct reference of basti being indicated in case of vandya is also again mentioned in Kashapa Samhita. Again, indicating this in case of the Sneha Basti, importance of Sneha Basti here again mentions it as Janayat Aprajanam Cha Prajam Strinam Tatandrunam. So the, again direct indication of Sneha Basti which can improve the status of the Stree for who is willing for a good progeny. One specific type of basti, that is Yapana basti. So it usually gives the action of Ayusho Yapanam Dirgha Kalanuvartanam. So the purpose of Yapana basti is to keep the Ayu or to increase the Ayu. So here also the importance or the speciality of this Yapana basti will be स्वस्थातुराणां च वृद्धानां च अविरोधिनः अतिव्यवायशीलानां शुक्रमांसबलप्रदः सर्वरोगप्रशमः सर्वेषु ऋतुषु योगिकः नारीणाम् अप्रजानां नराणां च अपत्यद उभयार्थकरः दृष्टाः स्नेहबस्तिं निरूहयोः. So here specifically in case of Narinam or Prajanam also Yapna Basti will be indicated. The special form of basti which will directly act upon the ashaya, that is nothing but the kshetra which is dealing with this particular process of fertilization, implantation, etc. So that is nothing but the garbhashaya. So Uttarabasti is a form of basti which is given Uttaramargena Diyamanataya, Shrestha Gunataya Basti, Uttarabasti. So this is given directly to the Garbhashaya. And here also the indications of this Uttarabasti will come up to the Yoni Vibhramsha, Yoni Shuleshu Tivreshu, Yoni Vyapat as well as Asrubdara. And this is highlighted to be given during the Artavakala, that is nothing but the Rutukala itself. Acharya Sushruta also mentions this Uttarabasti which is to be given after performing the other Panchakarma. So he says Tatra Yathadosham Vamanadi. So previously Yathadosha Vamanadi could be done and Uttarabastim Punaha Sarveshveva. So in all conditions of Yoni Vyapat, this Uttarabasti could be indicated after performing the Shodhana which is as per the doshas. So understanding the mode of action of this particular basti will be coming with respect to its definition of basti itself. That is, Navi Pradeshe Katipashva Kukshim Kritva Shakrudosha Chayam Vilodya Sasnehakayam Sapurisha Dosha Samyak Sukhena Eti Yaha Sabasti. So that particular virya of the basti or that particular medicine which reaches the Navi Pradesha Kati Pashva Kukshi, these particular area, which is nothing but the hip region, and Krutva Shakrut Dosha Chayam Vilodya. So along with the Shakrut, there is also Dosha Chaya, which is taken place, and Vilodana action will take place in that particular area. That is nothing but the churning action. And Sasnehakayam Sa Purisha Doshaha Samyak Sukhena Eti. So the Eti here refers to the expulsion or the elimination of this particular dosha along with the Purisha which is present, along with nourishing the body.
Ashtanga Sangraha also mentions one extra mode of action of Basti, which highlights regarding all the Panchavayu as well as Kapha and Pitta. So he says the Virya of the Aushadha first acts upon the Apanavayu. Then, after nourishment of the Apanavayu, then again it goes to the Samanavayu. Further to Vyana as well as Udana in this particular order itself. So once this is achieved and once all the Vatas come to its normal state or its natural state, then again it will go to the restoration of the other Murta Dravyas, that is nothing but the Pitta as well as Kapha. So once if this is also done, Santarpayanti Parataha is being mentioned. That is, there will be complete nourishment of the whole body. So this nourishment of the body usually happens in the form of Kedara Kulyanyaya itself. That is, Nadi Bihi Harinihi Bihi Iva Udakam. How this usually happens is the virya of the dravya goes in Tiryagati with the help of Vyanavayu, Adhogati with the help of Apanavayu, and Urdhvagati with the help of Pranavayu. So when it goes in all particular direction, so thus it achieves the main intention of Basti, that is Apadakala Murdhistan. So mean the whole body will be would have got the virya of this particular basti. So whatever the doshas which are present in those particular areas also will be eliminated with the help of this basti. Coming to the Nasya Karma, so Nasa Shirasodvaram is the main definition of Nasya Karma. So the medicine which is administered through the nasal route. Medicine could be even the Kashaya or Aushadha Siddha Sneha also. It mainly deals with the Urdhva Chaturgata Vikaras, but again, in certain conditions, also the Nasya Karma could be indicated, and specifically Nasya Karma being indicated in infertility is mentioned by Acharya Kashyapa. That is again in Kashyapa Kalpasthana, while he mentions regarding the Shatapushpa and Shatavari Kalpa, he mentions a formulation of Shatapushpa Taila, which can be administered through the nasal route. So this Nasya Dravya, which is given to the person, the Dravya gets absorbed through the mucosal epithelium. So this further again stimulates the arcuate nucleus as well as the limbic system. So basically the hypothalamus gets activated and there will be release of the gonadotropin releasing hormone. This again stimulates the pituitary for the release of FSH as well as LH hormones in a pulsatile manner, thus facilitating the ovulation. So certain tailas which could be used or certain snehas which could be used are Chandana taila, Bala taila, Shatapushpa taila and Falagrita. These are some of the tailas which could be used. So certain case studies I have mentioned in this particular presentation. We'll deal with it one by one. So first case being a female patient of 27-year-old with a history of irregular menstrual cycles since menarche and diagnosed with PCOS by USG. So married life was 4.5 years. So this was a condition of Shonita Dushti, that is again the Bija Dushti. So in case of the Bija Dushti, here again, Virechana was planned, Asrub Dosha being this, Virechana was planned with Shatavari Gruta followed by Virechana. So just after 2 cycles, she conceived and delivered a male baby. Case 2, a healthy couple with married life of 5 years had unexplained infertility. So all the investigations were found to be normal, but there was unexplained infertility. When I probed for more history, then I got to know it was mainly because of the stressful lifestyle, so which could be considered as the Manasobhitapat, where the predominance of Vata dosha was seen. So Sneha Sweda followed by Virechana Karma and also Basti Karma was done for both the partners, and specifically Shirodhara was conducted for the female partner. So this was mainly because
The Shirodhara usually it relieves the particular stress amount also. One thing is that, and also the activation of the hormones in the hypothalamus also will occur mainly because of the procedure which is Shirodhara. The next case with a female patient with uh, 32 years of age, as anxious to conceive since 5 years, and she was associated with irregular menstruation since 2 years. So the length of her periods was 3 to 4 days, with moderately 3 pads per day and no foul smelling. So, but the USG showed PCOS. So this could be taken as the Yathoachita Kala Adarshana. That is one of the form of the Artavakshaya. So even after giving Artava Janana Aushadhi like Pushpadanga Rasa was given and Rajapravartini also was given. So even after that, she did not get her menstruation. So Vamana Karma was planned since Acharyas also have mentioned Vamanam na Virechanam. So after the Vamana Karma, he was tested for UPT and UPT came out to be positive. The next case was of a 28-year-old female patient with no issues since 3 years. So she had scanty bleeding, that is only 1 pad per day, and also the cycle of her menstruation also was only for 2 to 3 days. Sometimes it also used to be only for 2 days. So this is a clear-cut case of Arthavakshaya with all the proper lakshanas of Yathochita Kala, Darshana, Alpatvam, as well as Yoni Vedana also was seen during some of her menstrual cycle. So for her, again, Vipanapachana was carried out and Snehapana with Falagruta was given. Abhyanga, Sarvanga Abhyanga and Bashpa Sveda in the form of Vishramakala of 1 day, it was given. And Vamana Karma was carried out. She got 7 Vegas and after that, her UPT became positive. The next case with married female of 26-year-old with no issues since 2 years, associated with irregular menstruation since Minar. The secondary sexual characters were normal. Her bleeding phase was only for 2 to 3 days. It was painless, and there was hypoplasticity in case of the uterus. It was seen in the USG. So this is also again a condition of the Bija Bhaga Avayava Dushti, that is the Ashaya. The Ashaya that is nothing but the Garvashaya, which is the Kshetra, important Kshetra. So that one is the Dushti here. So for her again Vamana Karma was carried out and Mustadi Yapanavasti was carried out. Again her UPT was positive. The next case with female patient of 23 years of age, an irregular menstrual cycle with prolonged bleeding since 6 months. So her bleeding used to go in for approximately 8 to 10 days also, but the period of gap was around 70 days. So this was a condition of Asrubdara. So in this condition, mainly dealing this with Virechana would be more convenient or would be more beneficial for the patient. So, firstly, to reach out to Asrubdara, Durva Swarasa as well as Amistop was given. Followed after that was achieved, after the stopping was done, then Deepanapachana was done with Chitrakadivati as well as Panchakola Fanta. Again, Snehapana with Shatavari Grita and Abhyanga as Vishramakala. Abhyanga and Bashpasveda as Vishramakala with Mahanarayana Taila was carried out. Virechana was given with Trivrit Lehya and Madhyama Shuddhi was achieved. So advice on discharge, the medicines were Ashwagandha Kshirapaka and Pushpa Dhanvarasa. So this was given for 15 days. So then after a period of 1 or 2 months, she conceived. The next case with a female patient of 25 years of age with again irregular menstrual cycle of 2 to 3 days with a 60 days gap.
She also had spontaneous abortions at 1.5 months. So this could be considered as the Garbhasravi, and this was given treatment with Deepanapachana, again with Chitrakadi and Panchakola Fanta, Snehapana with Mahakalyanaka Grita, Sarvanga Abhyanga with Mahanarayana Taila as a Vishramakala, and followed by Virechana with Tribhucleja. Again, 15 Vegas was achieved, that is Kapanta was achieved. So in this particular condition, Nasya Karma was given. This is mainly to uh, facilitate in increasing the HPO axis also. So the correction of the HPO axis was achieved after this Nasya Karma and discharge medicine. So then even she conceived. So that's being told Panchakarma is a procedure which is not only for a purpose of curative aspect, it is also coming under the preventive as well as the promotive. So preventive how being following the Rutucharya and Dinacharya, so that again will not lead to any particular Khavaigunya. Again, the next one is the promotive aspect where Acharya Charaka, again in Jati Sutriya Adhyaya, he mentions अव्यापन्न शुक्रशोणित गर्भाशययोः अपि स्त्रीपुंसयोः श्रेयः प्रजाजनकगुणाधानार्थम् Snehadi karma karanam. So here Snehadi karma, he mentions it as Sneha Sveda, Vamana, Virechana, Asthapana, and Anuvasana. So this, if it is being followed in the particular order, it will promote the proper progeny, proper formation of progeny. So this again comes under promotive aspect. The last one is the curative aspect, as which we have dealt here. The ones which are coming mainly because of the yoni vyapat as a complication of yoni vyapat. So such a condition also could be treated with panchakarma. So thus these three factors also will be handled by all the panchakarmas. So it is up to the Vaidya to see which avastha, desha, kala and bala is the patient being, and then only the panchakarma should be adopted. तस्मात् सत्यपि निर्देशे कुर्यात् ऊह्यं स्वयं धिया विना तर्केण या सिद्धिः यादृच्छा सिद्धिरेव च. So without giving due course to the avastha of the condition, the desha in which the person is, the kala as well as the bala, if any particular procedure is being indicated or if it is being done, it will lead to the yadrucha condition, that is just by luck the result would be there. So Vina Tarkena, it should not be done is the main highlight in that verse. So the highlight here now is Avastha, Desha, Kala and Bala should also be considered by selecting which Panchakarma is to be done. Thank you. हरिओम। हरिओम, नमस्कार सुरभि जी। Namaste sir. Namaste sir. एक्सीलेंट प्रेजेंटेशन सुरभि जी, Thank बहुत you. Thank अच्छा, you sir. Thank you sir. बहुत शानदार प्रेजेंटेशन आपने दिया। मैं अब जो एक्सपर्ट ऑफ द डाइस हैं, कोई भी प्रश्न का यदि मन में शंका, प्रश्न, वैल्यू एडिशन कुछ भी हो तो प्लीज, ऑल आर इनवाइटेड। मैं सभी एक्सपर्ट ऑफ द डाइस से डॉक्टर अंजना सक्सेना जी, आपकी कोई ओपिनियन? गायत्री जी हैं। नमस्कार। नमस्कार मैडम। नमस्कार सर, नमस्कार। बहुत अच्छा प्रेजेंटेशन था मैडम का आज। एक्चुअली मैडम ने जो पंचकर्म में हम लोग का स्त्री रोग की जो उपयोगिता बताई, बहुत बहुत मजा आया उसको सुन के। और रियली
सबसे अच्छा ये लगा क्योंकि उन्होंने पूरा शास्त्र वेद पे बताया, कश्यप संहिता, चरक संहिता, सुश्रुत संहिता, इन जिनका मेन, क्योंकि हम अगर कहीं भी कुछ काम करते हैं और हमसे जो क्वेश्चन पूछे जाते हैं, तो हमारे जो शास्त्र हैं, हमारे जो आप्त वाक्य हैं, जो हमारे आप्तोपदेश दिए गए हैं, उनके आधार पर जब हम किसी काम को बताते हैं, जो मैडम के अपने अनुभव रहे, मैडम ने अपने केस स्टडी बताए, और जिस हिसाब से बमन और विरेचन में मैडम ने बहुत अच्छे से बताया कि बमन के लिए जो है हमने जो सौम्य धातु है उसको निकालना रहता है, और आटा धातु उससे क्या होती है, इंक्रीज करती है। रियली मैम बुक्स में बहुत अच्छा बताया। और विरेचन के बारे में जब आपने स्पेशल बताया कि बीज की कार्मुकता को बढ़ाता है, तो इन दोनों में जब भी बात होती है तो ये रियली कुछ पेशेंट आती हैं बमन के लिए मना करती हैं, तो उसके लिए विरेचन को अगर हम इस सूत्र के आधार में विरेचन पे काम करते हैं, और जैसे नेचुरल सी बात है क्योंकि हम लेडीज पे काम कर रहे हैं, स्त्री पे काम कर रहे हैं, तो हम बहुत ही, क्योंकि वो लब्ध बल वाली होती है जिनका बल थोड़ा सा कम माना गया है, जो है अपने आप में थोड़ी मृदु होती हैं, तो हमें उसको मृदु ही विरेचन करना भी रहता है। और जिस हिसाब से बस्ती की बात आपने बताई, और बस्ती में भी आपने यापन बस्ती बताई, और भी बस्तियों के बारे में, उत्तर बस्ती के बारे में बहुत अच्छा आपका आज रहा। तो और एक्सपीरियंस जो आपने बताया कि इस हिसाब से हमने इस बस्ती, इस पेशेंट में इस तरह से हमने इसको वॉमन लिया, इसको विरेचन में लिया, ये भी बहुत ही उत्कृष्ट था और बहुत अच्छा लगा आपका सुन के। मुझे लगता है कि ये जो आप पवन सर इतने अच्छे से हम लोगों को, स्त्री और प्रसूति रोग को कामनी मैडम के साथ जोड़ के एक श्रृंखला बना रहे हैं, तो ये यूट्यूब हमारे जितने भी लोग देखते हैं, यूट्यूब से जो भी जुड़ते हैं, और यूट्यूब वाला बाद में भी हम सुन सकते हैं, तो उससे बहुत लाभ हो रहा है हमारे बच्चों को, हमारे नेक्स्ट जनरेशन को। और इसके लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद कि प्रसूति तंत्र रोग के लिए आप इतना अच्छा एक स्तंभ खड़ा कर रहे हैं, जिससे कि आगे आने वाली पीढ़ियां लाभान्वित होंगी। और हम शास्त्रों को देखेंगे, शास्त्रों के कहते हैं ना कि शास्त्रों की जो चक्षु है वो हमारे बच्चे को कम से कम उनको देख पाएंगे कि हाँ हमारे शास्त्रों में ऐसा वर्णन आया है। क्योंकि हम देख रहे हैं कि ये आजकल के निकालो। बच्चे क्या करते हैं कि बहुत शॉर्टकट करना चाहते हैं और बहुत सिंपल पढ़ाई करना चाहते हैं, लेकिन जब अपने अनुभव के साथ हम इस तरह के सेमिनार्स को अटेंड करते हैं और हमारे वक्ता लोग बताते हैं इतने कॉन्फिडेंस से, तो कहीं ना कहीं उसका बहुत अच्छा रिजल्ट मिलेगा आगे आने वाली पीढ़ियों में। जी सर। बहुत बहुत आभार अंजना जी आपका, बहुत बहुत आभार। अब मैं डॉक्टर गायत्री भट्ट जी को सादर आमंत्रित करता हूँ। डॉक्टर गायत्री मैडम। हेलो सर, नमस्ते सर। नमस्कार मैडम, नमस्कार। नमस्ते ना, गुड इवनिंग टू ऑल. I really congratulate Dr. Surabhi for her excellent presentation in such a young age. She has a good command on the subject, and she explained the mode of action in analytical way. It's a really interesting, and I appreciate Dr. Pawan Sharma sir also for giving opportunities to young minds to share their experience and knowledge, so that it's like inspiration for them, or the encouragement for them to excel in their career. And yeah, overall this presentation was outstanding, and being a Panchakarma specialist, she has explained the causes and importance of Rutukshetra Embu Bija in the formation of Garbha, and role of Panchakarma, and role of Tridoshas in the cycles. And yeah, overall the presentation was really good, and I hope all the audience got good food for their brain. And thank you so much, sir. Sir, बहुत thank बहुत you. आभार गायत्री जी, बहुत बहुत आभार आपका। आप लोग जो हीरे पैदा किए हैं ना, डायमंड्स, यू हैव ट्रेंड डायमंड्स, नो डाउट। थैंक यू. और किसी का कुछ भी वैल्यू एडिशन करना हो तो उनका स्वागत है। एक क्वेश्चन भी है सर इधर। स्वागत है, स्वागत है। आप थोड़ा किसी ने मॉडरेट लिखा कीजिए ना, आज कामिनी जी के एब्सेंस में आप है। मालिक। Yes, sir. Yeah, Kamini madam is in Dubai. She messaged me to moderate. So there is one question, Dr. Surabhi, can you take?
Hello, Surabhi? Hello, Dr. Surabhi? Hello. Yeah, there is Hello. one question. Kindly explain about treatment protocol for recurrent pregnancy loss in TORCH positive patient. Can you take that question? Yes, ma'am. Mm. So, in case of recurrent pregnancy loss, so that is, you can take it as the Garbhasravi itself. So, that particular lakshanas will also be seen in case of recurrent pregnancy loss. So, in such a condition, mainly the Pitta dosha would be predominant in such patients. So, ideally dealing with Pitta dosha, the kshetra also would also be affected. That is, the Garbhashaya would also be affected. So again, Virechana followed by Uttarabasti would be helpful in such a condition. And again, Uttarabasti with the help of Kalasarpi could also be helpful in such condition. Okay. There's another question. Kindly tells about amount of medicine for Uttarabasti. Can you? Yes, ma'am. Yeah, it's actually, yeah. Huh. So Uttarabasti, there are various medications which can be taken. So specifically in case of infertility, Uttarabasti with Falagruta, again Uttarabasti with Mahanarayana Taila could also be taken care. And Mahakalyanaka Gruta, there are also references of article references where Mahakalyanaka Gruta has also been used for Uttarabasti. In case of Uttarabasti for conditions like the dysmenorrhea or it may be because of PCOS condition. Also, it has been done with Dhanvantara Taila as well as Mahanarayana Taila. And the amount of Uttarabasti drug, actually, volume of uterus is 5 ml. So, 5 ml of medications can be introduced if you are giving Uttarabasti to uterus. And another, can you please explain cause of scanty menses? Can we give Basti in scanty menses? Also, which oral medicine can we give? Can you take that? Yes, ma'am. Yes. Scanty menses here you can consider it to be the alpatva of the Artava. That is again coming under the Artava Kshaya itself. So, in such a condition, Acharya has mentioned regarding the Shodhana. So, if we have to give a Basti, so since Basti has got the Shodhana Rupa also because of its various formulations, so the formulation should be made such that the Shodhana action will be more in that particular Basti. So, with dravyas like Shatapushpa, Guduchi, and Shatapushpa Guduchi in Kalkadravya and using Erandamula Kashaya Dravya can also be done with scanty menses and oral medicine in such a condition. So basically in these conditions, first we have to go in for the Panchakarma itself, then followed by the oral medicines like Pushpadhanva Rasa or Rajapravartinivati can also be given. Okay. So, sir, I think we can conclude. Hello, Pavan sir. Yeah, okay. Uh, uh, congratulations. Congratulations to Dr. Surabhi. And oh, yeah, this session will be now we are going to conclude. I thank Dr. Pavan Sharma sir, and Kamini Dhiman madam, and all the participants for their active participation. And also, I congratulate IRES Samriddhi platform for conducting this type of webinars and also giving opportunity for Prasuti fraternity every Thursday and Friday, Saturday
on for the discussion on gynecology and obstetrics. It's really a great opportunity for us. In future also, we keep in touch and make this webinar series a grand success. Thank you and all. Good night. थैंक यू वेरी मच, थैंक यू वेरी मच मैडम। बहुत अच्छा लगा, आज थोड़ा जल्दी शेष हो गया। मैं तो आशा कर रहा था कि लोग वहाँ वैल्यू एडिशन और भी करेंगे। आप लोग सभी एक्सपर्ट्स हैं। आज रामवीर शर्मा जी थोड़ा निकल गए जल्दी, तो मैं आशा कर, कहाँ है भाई जी रामवीर जी? आइए ना, आइए ना। आइए आइए, स्वागत है आपका। मैं वेट कर रहा हूँ, सभी वेट कर रहे हैं। आपके बिना तो वो वेबिनार अधूरी रहती है ना। बिल्कुल बिल्कुल। हमारे साथ अभी रामवीर शर्मा जी जुड़ रहे हैं, तो मैं केवल 3 मिनट का इंतजार करने को कहता हूँ। 3 मिनट के अंदर और भी हमारे साथ एक्सपर्ट्स हैं। कोई भी कुछ ऐड करना चाहे तो उसका स्वागत है। अदरवाइज हम रामवीर शर्मा जी के विचार सुनेंगे सेम सब्जेक्ट पर। वो जुड़े थे, अभी गाड़ी रख रहे हैं। जब तक सर आ रहे हैं, मैं मेरे केस आपके सामने रखने का प्रयास करता हूँ। स्वागत है विक्रम जी, स्वागत है। नमस्कार नमस्कार नमस्कार। नमस्कार। मेरे पास एक केस थी, थोड़ी सी अलग है, इसलिए आपके सामने पेश करने जा रहा हूँ। केस ऐसी थी स्वागत। कि वो लगभग 25-26 की उम्र से लेकर इनफर्टिलिटी का इशू चल रहा था, और अप टू एज 32, मतलब 25 से लेकर 32 तक प्रेगनेंसी हो नहीं पा रही थी। और इन दिनों में जो जो इंसिडेंसेस हुए वो ऐसे थे कि प्रेगनेंसी या तो रहती नहीं थी, या फिर रहती थी तो वो पहले ही महीने में टर्मिनेट हो जाती थी। मेल पार्टनर, फीमेल पार्टनर दोनों के पूरे जितने भी हार्मोनल ऐसे है वो सारे के सारे करवा लिए थे। थायराइड करवा लिया था, HbA1c करवा लिया था, सब सारे जितने हैं वो सब करवा लिए थे। दोनों भी डॉक्टर्स थे, बट स्टिल उनमें कुछ इम्प्रूवमेंट नहीं आ रहा था। वो फर्क उनके में कुछ दिख नहीं दे रहा था। इस कंडीशन में वो दोनों एलोपैथी प्रैक्टिस करने वाले थे, वो अपने पास आ गए। तो पहली बात ये थी कि 4-4 6-6 महीने ट्राई करने के बाद भी प्रेगनेंसी ना रहना, और वो भी सब नॉर्मल होने के बाद, तो इसके ऊपर एक मन में विचार आया कि पारा और गंधक जो है, उन्हें शिव जी का वीर्य और माता पार्वती का रज बताया है। तो हम जब भी कोई कल्पना रसकल्प की बनाते हैं, तो उस वक्त रसकल्प में सबसे पहला बॉन्डिंग जो है वो माता पार्वती और शिव जी का है, जो गंधक और पारद का है, जिससे कज्जली बनती है, और जिससे आगे जाकर हम कई सारे कल्प बनाते हैं। तो अभी हम यावंतो लोके तावंतो पुरुषे इस विषय से थोड़ा सा विचार करें, तो जो मेल पार्टनर है, क्यों ना हम उसको शिव जी की जगह पे रख कर देखें, और फीमेल पार्टनर को माता पार्वती की जगह पर देख के, तो हमें ऐसा समझ में आता है कि द अफेक्शन ऑफ द रज फॉर दैट वीर्य और शुक्र is not that much good, and that's why it's not accepting the uh, uh, semen or sperms, and that's why she is not getting fertilized. सो ये विचार एक हमारे मन में आया था। तो ऐसे कंडीशन में क्या करना चाहिए, तो हमने इन पेशेंट्स में, मेल पेशेंट्स में मकरध्वज जैसे मेडिसिन खिलाना शुरू कर दिया, जिससे उनका शुक्र बल और बढ़ जाए। हालांकि किसी भी रिपोर्ट में कोई भी विकृति नहीं थी। और फीमेल पेशेंट्स में सिर्फ गंधक रसायन खिलाना शुरू कर दिया, क्योंकि गंधक के फलश्रुति में सिर्फ गंधक जो है उसकी फलश्रुति में उसे वंध्यत्व में इस्तेमाल करने के लिए आया हुआ है। तो ऐसी कंडीशन में अगर हम गंधक देंगे, तो गंधक से गंधक की वृद्धि होगी, वो भी प्राकृत होगी। और मेल पार्टनर जो है उसमें अगर शुक्र की वृद्धि और अच्छे से होगी क्वालिटी वाइज, तो ऑब्वियसली दोनों का एक भी दूसरे की तरफ होने वाला जो अफेक्शन है वो बढ़ जाएगा। ये विचार करके इन दोनों को ये मेडिसिन दे दी थी। और पहले ही बार, पहले ही महीने में मेडिसिन शुरू करने के पहले ही बार
उनको प्रेगनेंसी रहेगी और वो विदाउट टर्मिनेशन पूरा हेल्दी बेबी उन्होंने 9 महीने के बाद डिलीवर कर दिया। और ये केस होने के बाद ऐसे जितने भी केसेस हमारे पास आए तो उनमें हमने यही फंडा इस्तेमाल किया इस तरीके से आने वाले। तो उनमें ये फंडा लगभग 80-90% तक चल पड़ रहा है, इतने अच्छे रिजल्ट्स उसके आ रहे हैं। विक्रांत जी, हाँ जी। कोई प्रश्न का उत्तर चाहिए कि? आदरणीय रामवीर भाई जी आ चुके हैं। भाई जी प्रणाम। प्रणाम भाई जी, प्रणाम। रामवीर भाई जी को प्रणाम। हाँ भाई जी, प्रणाम। भाई जी आपकी आवाज। हाँ जी, क्या 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 सब्जेक्ट पे चल रहा था? पंचकर्म फॉर इनफर्टिलिटी। हाँ जी, हाँ जी। पंचकर्म के ऊपर बात चल रही थी जैसा आपने बताया। तो मैं थोड़ा सा उसमें ट्रैवलिंग में था, गाड़ी चला रहा था, आपसे बात हुई बीच में, मैंने सुना भी दिया मैम ने। अभी उन्होंने हर सब्जेक्ट को छुआ, लगभग पीसीओडी को भी देखा, और अपने यूट्राइन प्रॉब्लम थी उसके बारे में भी चर्चा की। जहाँ तक वो पंचकर्म की बात है तो अलग अलग पंचकर्म, अलग अलग चीजें। एक चीज उन्होंने बताई, फिरोविरेचन। फिरोविरेचन का जो कार्य होता है वो होता है अपने नस्य का नासाई शीर्षो द्वारम तेन तदव्याप्य हंसिताम। तो नासा सिर के रोग हैं, सिर के जो जत्रुवत ऊपर के रोग हैं उनके अंदर अपने काम करता है। तो अगर देखा जाए तो जैसे अपने जानते हैं कि अगर नेजल कैविटी के अंदर कोई भी ड्रग्स डालते हैं तो पिट्यूटरी के दो पार्ट हैं। जरूरी नहीं है कि अपने हाइपोथैलेमस पे ही काम करती है। हाइपोथैलेमस पे पिट्यूटरी और हाइपोथैलेमस क्या है, हाइपोन्यूरोसिस के द्वारा जुड़े हुए हैं। एडिनो हाइपोसिस और अपने न्यूरो हाइपोपाइसिस। न्यूरल के द्वारा जुड़े होने की वजह से हो सकता है कि अब ये नहीं कह सकता कि ऐसा होता ही है। लोग इस तरह के दावा करते हैं कि हम लोगों ने कभी किया नहीं है। जिस तरह से GnRH एनालॉग्स वो देते हैं तो GnRH का बढ़ता है, उस GnRH का फर्क पड़ता है और पिट्यूटरी पे काम करता है। मगर हम लोग दावा कर देते हैं कि GnRH बढ़ता है, ऐसा हमें दावा नहीं करता। हो सकता है बढ़ता हो, कि मैंने तो कभी किया नहीं कि GnRH का अपने एनालिसिस कराया हो, नस्यकर्म करने के बाद में GnRH बढ़ रहा हो सकता है बढ़ता हो, ऐसी संभावना है, प्रोबेबिलिटी है। जो अपने GnRH की वजह से अपने नस्य देने से FSH को और LH को भी सर्च करता हो। FSH को सर्च करने से फॉलिकुलेशन होता हो, फॉलिकुलर स्टिमुलेशन के साथ साथ में फॉलिकल मैच्योर होने के बाद में अंधत्व का कारण बनता हो, ऐसी संभावना है। मगर इसमें फिर वही बात आती है कि आर्तव काल के अंदर अगर महिला को नष्ट दिया जाता है वो तो नष्ट पुष्पा हो जाती है, ऐसा आचार्य कहते हैं। ये आर्तव काल के अंदर नष्ट कर्म के लिए वर्जित किया गया है, मना किया गया है। तो क्या किस तरह का आप नस्य कौन सा देना है? नस्य अपने तीक्ष्ण नस्य भी है, मृदु नस्य भी है। तो कौन सा नस्य देना है ये अपने डिपेंड करता है किस तरह का नस्य देना है। तो नस्य भी अलग अलग तरह के मैडम ने बताए, उनका प्रयोग किया जा सकता है। नस्य घृत का नस्य है, तेल का नस्य है, और अलग अलग नस्य हैं। तो घृत का कहाँ देना है, तेल का कहाँ देना है, किस तरह की प्रॉब्लम आ रही है। HP एक्सिस आप देख रहे हैं, तो HP एक्सिस के अंदर अपने को देखना पड़ेगा कि कौन सी जगह पे प्रॉब्लम है। पिट्यूटरी में है, हाइपोथैलेमस में है, ओवरी में अंतर है। तो नस्य अगर ओवरी पे दे रहे हैं तो ओवरी पे तो फंक्शन नहीं करेगा, जाके करेगा हाइपोफाइसिस पे, या अपने न्यूरो हाइपोफाइसिस या फिर अपने एडिनो हाइपोफाइसिस पे काम करेगा, जिसको पिट्यूटरी कहते हैं। तो उसका रिजल्ट इसके अंदर मिल सकता है नस्यकर्म। जहाँ तक अपने स्ट्रेस की बात हुई, तो स्ट्रेस में जो तिरोधारा करते हैं तो निश्चित ही जो स्ट्रेस है, जो अपने स्ट्रेस के साथ साथ में एंजाइटी है, स्ट्रेस है, ये भी अपने नर्व के ऊपर काम कर, वो भी पेरिफेरल नर्व के ऊपर, पेरिफेरल नर्व से काम करने के वजह से इसको स्ट्रेस को कम करेगा। तो जो अपने बात जो सोमनस्कम गर्भ कराणाम है उसके ऊपर रिजल्ट मिल सकता है कि इसकी जगह से अपनी GnRH का सीक्रेशन करता हो इसका ऊपर।
जहाँ तक अपने अलग अलग बात है, गर्भाशय की बात है, तो आचार्य पहले ही कह गया है कि जो गर्भाश्रजी विरेका, गर्भाशय अस्त्रजी विरेका, जिसके अंदर गर्भाशय के अंदर से अगर ज्यादा मात्रा में ब्लीडिंग हो रही है, मेंसेस अधिक मात्रा में आ रहा है, तो उसके अंदर अपने को विरेचन देंगे। अधिक मात्रा में आ रहा है या बार बार आ रहा है, उसके अंदर तो विरेचन नहीं देंगे, क्योंकि उसमें बात है तो अधिक मात्रा में जो आ रहा है, लंबे टाइम तक आ रहा है, तो इसका मतलब वहाँ पित्त बढ़ा हुआ है, तो वहां पे विरेचन देने के लिए आचार्य कहते हैं। काश्यप संहिता में बिल्कुल क्लियर कहा गया है कि गर्भाशय असृजी विरेका। इसी तरह से अनुवासन के लिए कहा गया है अल्प पुष्पा नष्ट पुष्पा। देखिए यहाँ पे अल्प पुष्पा, नष्ट पुष्पा और नष्ट बीजा, दो चीज शब्द यूज किए, नष्ट पुष्पा और नष्ट बीजा। अकर्मण्या तो अनुवास्य। अब नष्ट, इसका मतलब बीज और पुष्प, बीज ये अपने पुरुषों के लिए कहा गया है। अगर पुरुषों के अंदर, अभी डॉक्टर साहब ने जैसे बात की थी, पुरुषों के अंदर बीज की कमी है तो उसको अनुवासन दें, स्त्रियों में अगर पुष्प की कमी है तो उसको अनुवासन दें। अल्प मात्रा में पुष्प आ रहा है, उसको अनुवासन के लिए कहा गया है। और अल्प बीजा के साथ में अकर्मण्य बीजा, अकर्मण्य परिता, तो अकर्मण्य परिता, ये जो बीज हो रहा है उसके बाद में प्रेगनेंसी नहीं हो रही, उसको अकर्मण्य परिता कहेंगे। इसी तरह से पुरुषों के अंदर भी अकर्मण्य परिता है, इसमें इम्पोर्टेंसी है, इम्पोर्टेंसी के साथ में शुक्र का अगर वर्धन नहीं हो रहा है, वहां पे भी अपने बस्ती के लिए, यापन बस्ती के लिए कहा गया। तो यापन बस्ती यानी जो ग्रहण कर रखी है, उसके लिए कहा गया। निरूपण के लिए बहुत अच्छा चारक पूरी तरह से क्लियर कहता है, नारीणाम अप्रजाता नाम और नराणाम चाप्य अपत्यदम। तो जो अपने निरूबस्ती है वो भी अपने पुरुषों के लिए, स्त्रियों के लिए, दोनों के लिए कहा गया है। नारीणाम अप्रजाता नाम, जिसको बच्चा पैदा नहीं हो रहा उसको, और जो पुरुष हैं नारायणाम चाप्य अपत्यदम, उनको अपत्य देने वाला है। इसका मतलब स्पर्म को भी बढ़ाती है और ओवुलेशन भी कराती है। इसी तरह से और जो अपने जो उत्तर बस्ती की बात है, तो उत्तर बस्ती तो देते ही है, उत्तर बस्ती को वही बात आ जाती है। हमारे आयुर्वेद के अंदर उत्तर बस्ती देने के लिए जो प्रावधान किया गया है, वो अपने इंट्रायूट्राइन के लिए नहीं, हम लोग आधुनिक आधार पर अपने इंट्रायूट्राइन देते हैं हम लोग, मगर विजयनल अपने उत्तर बस्ती, योनिगत उत्तर बस्ती के लिए कहा गया है। तो उत्तर बस्ती के लिए उन्होंने क्लियर कह दिया, कहा है दुष्टशोणितम पुष्पाद्रेकम तत्नाशय क्षयम, चार चीजें बताई उन्होंने। मूत्र मार्ग उत्तर बस्ती अलग है, मूत्र मार्ग के अलग उन्होंने इंडिकेशन बताए हैं। योनि मार्ग का जो उन्होंने बताए हैं, तो दुष्टशोणितम पुष्पाद्रेकम, अधिक मात्रा में रक्त आना, और तस्चानाश है, रक्त का कमाना, उसका नाश हो जाना, या फिर अपने क्षयम, उसका क्षय हो जाना, इनके लिए उन्होंने बताया। तो पंचकर्म का किस जगह पे कौन सी मेडिसिन का प्रयोग करना है, अब वही बात आ जाती है। अगर यूट्राइन हाइपरप्लेजिया है तो वहाँ अलग होगी। अगर यूट्रस के अंदर इंडोमेट्रियम की थिकनेस कम है, हाइपोप्लास्टिक यूट्रस है, तो उसकी अलग बस्ती होगी। इसी तरह से नस्य भी अलग अलग टाइप का होगा। जहाँ तक स्रोधारा की बात है, तो स्रोधारा के अंदर तो तक्र धारा भी करते हैं, तेल धारा भी करते हैं, और अलग अलग तरह की धाराएं करते हैं, जल धारा भी करते हैं, उसका अलग रहेगा। तो किसका कहाँ, हम लोग क्या करते हैं दरअसल में, अगर पीसीओडी पे काम करना है तो कम से कम एक उत्तर बस्ती दे रहे हैं, एक ही तरह की उत्तर बस्ती हम दें, और पीसीओडी के 25 पेशेंट पे दें, बाकी की दवाइयों को दे छोड़ के, तो उसके ऊपर हम वर्क करें, उसको हम प्रेजेंट करें, तो ऐसा लगता है कि हाँ हमने काम किया, उसका रिजल्ट है। होता क्या, हम मेडिसिन भी दे रहे हैं, उत्तर बस्ती भी दे रहे हैं, और उसके बाद में अपने नस्य भी दे रहे हैं, और बमनी भी करा रहे हैं, तो ये पता नहीं चल पाता किस मेडिसिन का इतना अच्छा रिजल्ट है। तो मेरा ऐसा मानना है कि अपने जो मेडिसिन दे रहे हैं, एक मेडिसिन दें और उसके साथ में उत्तर बस्ती दें, तो अपने को ये कॉम्बिनेशन बन जाएगा। उत्तर बस्ती पीसीओडी के पेशेंट है, उसमें ये मेडिसिन दी और ये पंचकर्म कराया, उसका रिजल्ट हमको मिला। 25 या 10 या 12 पेशेंट पर करें, उसके बाद में हम कह सकते हैं हाँ ये काम कर रहा है। हाँ, अगर इन्वेस्टिगेशन कर रहे हैं तो इन्वेस्टिगेशन हम कह सकते हैं कि ऐसे हमने ये मेडिसिन दी, नस्य दिया और फलगृत दिया, फलगृत का नस्य दिया, फलगृत का पान कराया, उसके परिणाम स्वरूप हमारा एफएसएच की मात्रा इतनी बड़ी, एलएच की मात्रा इतनी बड़ी, फॉलिकुलर फेज में एफएसएच इतना था और अपने एलएच इतना था, इनमें क्या वेरिएशन हो रहा है 3 महीने के बाद में, उसको अपने एनालिसिस करके अगर प्रेजेंट करें 10 पेशेंट का, तो हम कह सकते हैं कि पर्टिकुलरली कि हाँ इसका मेडिसिन का इतने ज्यादा अच्छा रिजल्ट है। जहाँ तक डॉक्टर साहब ने अभी जस्ट बात किए थे, बड़ी बड़ी साइंटिफिक बात है कि शुक्र और आर्तव को जो भगवान शिव का कहा गया है, पार्वती का वो कहा गया है गंधक को,
तो जहाँ ईस्टोजिनेसिस होता है, ईस्ट्रोजन का यहाँ पे अपने जो सिंथेसिस होता है या उसको एरोमेटाइजेशन जिसको कहते हैं, वहाँ पे सल्फर आयन की जरूरत पड़ती है। बड़ी क्लियर बात है कि सल्फर आयन की क्लियर है, इसलिए आपने जो सल्फर का आपने गंधक रसायन दिया है वो निश्चित ही उसको गंधक, उसको जो फॉलिकुलेशन हो रहा है, फॉलिकुलन के साथ में ओवुलेशन हो रहा है, ओवुलेशन के लिए ओवरी पे काम करने के लिए जो है वो सल्फर आयन की जरूरत पड़ती है। जहाँ तक स्पर्मेटोजेनेसिस की जरूरत है तो वहां पर उसका तो नहीं देखा, अपने मकरध्वज बट्टी देते हैं, अपने मकरध्वज रस देते हैं, मगर जिंक जरूर है। स्पर्मेटोजेनेसिस होता है वहां पे मेटेलिक के रूप में जिंक का प्रयोग किया जाता है। तो जिंक जो है उसको कैटालाइजर का काम करने की वजह से स्पर्मेटोजेनेसिस को बढ़ाता है, जिसके परिणाम स्वरूप अपने को बंधत्व के अंदर, पुरुष और स्त्री बंधत्व के अंदर काम करता है। जहाँ तक पंचकर्म का अकेले स्त्री रोगों के अंदर क्यों, पुरुष के अंदर क्यों नहीं? पुरुष बंधत्व है तो पुरुष बंधत्व के अंदर भी उत्तर बस्ती का प्रयोग, बस्ती का प्रयोग, नस्य का प्रयोग, ये पुरुष के बंधत्व के अंदर भी इस तरह के उसका प्रयोग किया जा सकता है। मगर मेडिसिन कौन सी सेलेक्ट करनी है, ये मेडिसिन सेलेक्ट करना पेशेंट के ऊपर डिपेंड करता है। पेशेंट किस तरह का है, दोष क्या है, उसको दोष से क्या है, पैथोजेनेसिस क्या है, कहाँ पैथोजेनेसिस हो रही है, ओवरी में हो रही है, पिट्यूटरी में हो रही है, यूट्रस में हो रही है, या वेजाना के अंदर हो रही है। मान लीजिए किसी के वेजाना का पीएच ही बढ़ा हुआ है, सॉरी पीछे घटा हुआ है, एसिडिटी बढ़ी हुई है, स्पर्मिस्टेट का काम कर रहा है, वहां पे सिर्फ सोडियम बाइकार्बोनेट का, एक सिंपल सा सोडियम बाइकार्बोनेट का सोडा घोल के पानी के अंदर उसको उत्तर बस्ती दे देते हैं प्री कोइटस, और प्री कोइटल उत्तर बस्ती देने के बाद में उसको न्यूट्रलाइज हो जाता है उसका एनवायरमेंट, और उसके अंदर फर्टिलाइजेशन हो जाता है। तो सिंपल सी चीजों को अपने देखा है। इसी तरह से अपने अगर म्यूकस प्लग ज्यादा है, म्यूकस प्लग अगर ठीक है, तो उसके अंदर भी अगर उत्तर बस्ती देते हैं, उसके अंदर उत्तर बस्ती देंगे, वो अपने थोड़ा सा चंदबाजी तेल वगैरह की देंगे, तो उससे वो लिक्विफाइड होगा और उसके अंदर स्पर्म जाने के अंदर जाने की संभावना बन जाएगी, उससे भी अपने फर्टिलाइजेशन हो जाएगा। तो किस तरह की उत्तर बस्ती कहाँ देनी है, उसको अपने पैथोलॉजी को देखते हुए, सर्वाइकल म्यूटेशन प्रॉब्लम है या वेजाइनल एनवायरनमेंट के अंदर प्रॉब्लम है, या यूट्रस के अंदर, यूट्रस में अगर हाइपोट्रोफी है, एंडोमेट्रियम थिन है, तो उसके अंदर अपने जो उत्तर बस्ती देंगे तो घृत भी देंगे, चाहे वो फल घृत हो, चाहे शतावरी घृत हो, चाहे अपने कोई भी घृत हो। तो इसी तरह से अगर उसके अंदर कम है, कम मानना है, थिन है, तो उसको बात को मानते हुए, तो जो अगर थिन थिक है, हाइपरप्लेसिया है, तो उसके में घृत भी, अगर अपने थिन है तो उसको बात की मानते हुए तेल की उत्तर बस्ती देंगे तो उसमें रिजल्ट अच्छे मिलेंगे, ऐसा मेरा मानना है। मगर एक मेडिसिन को 10 पेशेंट पर जब तक प्रयोग नहीं करें तब तक अपने डाटा जो प्रेजेंट कर देते हैं, केस प्रेजेंटेशन, ये मुझे लगता है थोड़ा सा मुझे कम लगता है। थोड़ा सा कुछ लोगों को नहीं, 6 लोग पे, 7 लोग पे, 8 लोगों का एक रिजल्ट, एक मेडिसिन, 2 मेडिसिन देके रिजल्ट देखें और उसके अंदर या फिर एनालिसिस कराएं, उसमें अपने को रिजल्ट मिले तब अपने मान सकते हैं कि हाँ बहुत अच्छा रिजल्ट मिल रहा है। और आपने मुझे बोलने का समय दिया उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। और मैम ने जिन्होंने बोला पहले, उनको मैंने पूरा नहीं सुन पाया, उन्होंने अच्छा प्रेजेंटेशन किया, क्योंकि वो पंचकर्म का अच्छा, मैं पंचकर्म नहीं करता, मगर पंचकर्म अपने स्त्री लोगों के अंदर तो करते ही हैं, तो धीरे धीरे करके सीखते रहते हैं। पंचकर्म का इतना विज्ञाता नहीं हूँ, फिर भी आपने मुझे बोलने का समय दिया उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू वेरी मच। आभार। बहुत बहुत आभार साहब, आपका बहुत बहुत आभार। मैं तो ये जानता हूँ आपके बिना वेबिनार अधूरी सी लगती है, जो मैंने आपको परेशानी में भी बुला लिया। कोई बहुत नहीं, अच्छा लगता है। घर पहुंचने के बाद तो मैं ज्वाइन करता ही करता हूँ, इधर उधर बिजी हो जाता हूँ फिर ज्वाइन नहीं करता। मेरे को तो मजा लगता है, अच्छा लगता है सब लोगों के साथ बात करने में और कुछ सीखने में, क्योंकि पंचकर्म अपने नहीं जानते तो पंचकर्म वाला कुछ बोल रहा है तो मेरे को सीखने ही मिल रहा है कुछ नहीं। आमंत्रित करता हूँ। आपकी आवाज नहीं आ रही, शायद कोई नेटवर्क प्रॉब्लम है, यहाँ है या आपके यहाँ, पता नहीं। हाँ पवन जी, आवाज नहीं आ रही आपकी। सुश्रुत जयंती पर ऊपर है, हम प्लीज जुड़े रहिएगा। आज के वक्ता हमें बोलने वाले हैं क्या क्या, अलग अलग तीनों वक्ता अलग सब्जेक्ट में इसमें बोलते हैं, एक सब्जेक्ट नहीं वर्णन
हम सुश्रुत जी को श्रद्धांजलि के रूप में इस वेबिनार को ऑर्गेनाइज कर रहे हैं। इस वेबिनार के लिए मैं महेश संघवी जी का बहुत बहुत आभार व्यक्त करता हूँ। हमारे वक्ता भी जुड़ने लगे हैं। मैं बहुत बहुत आभार व्यक्त करता हूँ महेश संघवी जी का, दिनेश जी का, डॉक्टर दिनेश पानवाड़े। बहुत ही एक ऐसी शानदार, हमेशा 7 दिन की एक प्रस्तुति रहती है, और वो भी मैं महेश संघवी जी को धन्यवाद देता हूँ। आप कमाल सोचिए, वो इस समय अमरनाथ यात्रा पे हैं और तो भी उन्होंने पूरी व्यवस्था सुश्रुत जयंती की बहुत शानदार की। मैं उन्हें हृदय से पुनः आभार व्यक्त करता हूँ। बहुत बहुत आभार आपका संघवी साहेब, बहुत बहुत आभार। मैं लिंक चेंज कर रहा हूँ। हाँ जी।